I think yeah, I need to be the host. Okay, thank you. Okay, morning everyone. Guys, can you hear me? Good morning, sir. Yeah. Okay, today I will try to give you an idea about कि डेटा फील्ड में कैसे कैसे कौन से रोल्स होते हैं एंड हाउ द डेटा मूवमेंट हैपेंस। ओके, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक डेटा मूवमेंट कैसा होता है, उसके लिए कौन से टीम की जरूरत है एंड व्हाट एक्चुअली दे डू एंड व्हाट आर द स्किल सेट रिक्वायर्ड फॉर ईच रोल। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग टू डिस्कस टुडे। एनी पॉइंट एनीवेयर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में नहीं आता है, प्लीज स्टॉप मी। I will try to clarify your questions. So, Okay, I'm sharing my screen. Let me know once you see my screen. so everyone here understands Hindi, Odia comfortable, right? Odia भी बुझुचो, Hindi भी बुझुचो, ना काहर किछि. Is there anyone who do not understand Odia or anything? ऐसा ऐसा मतलब कोई है क्या? समस्ते ओडिया बुझुचंती, हिंदी बुझुचंती, इंग्लिश बुझुचंती, right? ना काहर किछि इशू अच्छे before we start the session. Comfortable, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Any language you guys are comfortable, right? All right. So sir, take it ahead. Yeah. Okay, just 1 minute. Okay, so see why data analytics is required, that we have discussed in the last session. Can somebody help me to understand what is the use of data analytics? हम किस लिए डेटा एनालिटिक्स करते हैं या फिर कंपनीज किस लिए डेटा एनालिटिक्स यूज करता है? Sir, to make informed decisions. Very good. So basically to make informed decisions, random decisions नहीं, informed decision making करने के लिए people need data analytics, right? So वो data analytics is a very huge domain. Okay, इसके अंदर बहुत सारे चीजें होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है, दैट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेटा एनालिटिक्स करने के लिए मेन चीज हमें क्या चाहिए? What is the main important thing we need for data analytics? Whatever comes to your mind, you can tell me. डाटा सर। वेरी गुड। ओके, डेटा एनालिटिक्स करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए? हमारे पास डेटा होना चाहिए। विदाउट डेटा वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ एनालिसिस, राइट? सो हमें क्या चाहिए? डेटा चाहिए। सो डेटा कहाँ पे जनरेट होता है? डेटा बेसिकली जनरेट्स इन टू वेज। ओके, वन इज थ्रू मशीन या फिर थ्रू ह्यूमन। ओके, मशीन या ह्यूमन मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू एनी स्टोर या फिर ऑनलाइन स्टोर या ऑफलाइन स्टोर या सुपर मार्केट, कहीं पे भी अगर आप जाके कुछ परचेस कर रहे हो, जब आपका चेकआउट होता है जहां पे आप यू पे द बिल एंड ऑल, व्हाट दे विल डू, दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ मशीन, जहां पे वो लोग आपके जो आपने जो जो सामान खरीदे हैं एवरीथिंग दे विल स्कैन इट, राइट? ऐसा नो? Yes, sir. So they will scan all the products which you are buying. For every product, for example, you are taking, for example, some clothes and all, maybe 2 pairs of clothes, yeah, pairs of clothes. Similarly, some other thing and all. So every detail it will be mentioned. यूनिट प्राइस क्या है, आपने कितनी क्वांटिटी में आपने खरीदा है, ओवरऑल प्राइस क्या हो रहा है, फाइनली जीएसटी प्राइस क्या हो रहा है, कुछ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कितना अप्लाई हो रहा है। फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एवरीथिंग विल बी scanned and it is entered into a machine through a machine. And also they will take your personal data, जैसे कि आपका फोन नंबर लेते हैं, what they will do with your phone number, because phone number is unique, दो बंदों का एक फोन नंबर नहीं होगा, राइट?
So they will take your phone number and they will create a customer ID कि ये phone number वाला एक customer ID है. So later on it will be helpful for them to analyze कि this phone number bearing customer is coming on daily basis, या फिर he is coming on weekly basis, या फिर he is coming only on weekends. Whenever he is coming, what kind of purchases he is doing, whether he is only buying groceries, whether he is buying only the cosmetics, एक्चुअली उसका पैटर्न क्या है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी कैन एनालाइज विद दैट डेटा. सो डेटा जहां पे जनरेट हो रहा है, इट कैन बी थ्रू मशीन या फिर थ्रू ह्यूमन. ह्यूमन मतलब क्या होता है, अगर छोटी छोटी कंपनी है या फिर सम स्मॉल शॉप इज देयर, they also want to do some data analytics. What they can do, they can open an excel sheet. एक्सेल शीट में वो लोग एंटर करेंगे कि कस्टमर कौन है, क्या क्या परचेज किया है, कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है, कितना सेल हुआ है. दे कैन यूज एन एक्सेल शीट, राइट. वो एक्सेल शीट में वो खुद डेटा एंट्री करेंगे, ऐसा नो. टू गिव यू जस्ट टू ऐड, आप लोग जो स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हो, कोई भी ऐप में जाते हो और आप टैप करते हो, आप इंफॉर्मेशन भरते हो, जैसे आपने एक ट्रेड बुक किया, आप कुछ शेयर्स खरीद रहे हो, आप लेट्स से अमेजोन से कुछ ऑनलाइन बाय कर रहे हो, तो तभी डेटा जनरेट होता है. आप जोमेटो में कुछ मतलब फूड ऑर्डर कर रहे हो, तो क्या क्या डेटा जनरेट होता है? रेस्टोरेंट का डिटेल्स जाता है, जो बंदा डिलीवर करेगा फूड ऑर्डर, डिलीवरी बॉय का डिटेल्स आता है, आपका आपका जो आपका पर्सनल डिटेल्स जाता है, आपका आप कहाँ पे फूड डिलीवर कर पाओगे वो भी डिटेल्स कैप्चर होता है. आप लेट्स से ऑनलाइन कुछ खरीदते हो, प्रोडक्ट का डिटेल्स विथ क्वांटिटी विथ प्राइस, कहाँ पे डिलीवर होगा, कौन डिलीवर करेगा. आप राइड बुक कर रहे हो, उबर ड्राइवर डिटेल्स बुक होता है, व्हीकल डिटेल्स बुक होता है, राइडर डिटेल्स बुक होता है, आप कस्टमर डिटेल्स बुक होता है, आई मीन कैप्चर होता है. ऐसे ही मतलब आप स्मार्टफोन ओपन करके कोई भी एप्लीकेशन टैप करके कुछ भी कर रहे हो ना, डेटा गेट्स जनरेटेड. जैसे सर ने मशीन बोला, वही मशीन और सॉफ्टवेयर दैट एक्चुअली जनरेट्स द डेटा. और एक दूसरा तरीका है, ह्यूमन भी मैन्युअली डेटा एंट्री करके डेटा जनरेट करते हैं. मतलब कोई सर्वे हो गया, जो आपका मैं भी मतलब सुभद्रा योजना हो गया, कालिया योजना हो गया, उसमें क्या होता है बेसिकली डेटा सर्वे करके ब्लॉक लेवल पे जाके, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ये सब लेवल पे, पंचायत लेवल पे जाके भी डेटा सर्वे करके मैन्युअली डेटा एंट्री होता है. उसको कोई बंदा बैठ के सिस्टम में टाइप करके देता है, फिर वो गवर्नमेंट उसको डेटा को लेके यूज करके डिसीजन लेते हैं, राइट. दैट इज हाउ डेटा गेट्स जनरेटेड. आपका सीसीटीवी भी डेटा जनरेट कर रहा है, आपके जो रोड पे हाईवे में जो कैमरा लगा हुआ है, आप ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हो कि नहीं, वो भी डेटा जनरेट कर रहा है, क्योंकि वो आपका गाड़ी का डिटेल सारे डिटेल्स कैप्चर करता है, राइट. दिस इज हाउ डेटा गेट्स जनरेटेड. आपका कोई भी डिवाइस, ठीक है, आप यूज कर रहे हो, दैट जनरेट्स डेटा. इवन आपका वीडियो डेटा, आपके ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, दैट इज ऑल्सो डेटा. दैट इज ऑल्सो डेटा इन विजुअल फॉर्म, राइट. अब आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो डेटा को आप मतलब उसको एनालाइज करके ही डिसीजन ले सकते हो, समझ सकते हो कि क्या हुआ, कौन आया था घर पे, कौन चोरी किया सामान, राइट. दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डेटा ओनली, करेक्ट. Are you able to follow, guys? Yes, sir. राइट. सो हर जगह से डेटा आ रहा है. मेजरली टू वेज से डेटा आ सकता है. एक है थ्रू मशीन, जैसे कि स्कैन मशीन होता है जहाँ पे डेटा एंट्री होता है, या फिर ह्यूमन जहाँ पे एक्सेल हो गया, नोट पैड हो गया, या फिर पेन पेपर लेके भी पीपल कैन एंटर द डेटा. So these are the two ways data will be generated. Let's take an example. Let's take an example of some automobile company, या फिर let's take an example of bank. Everybody will understand this one. Okay, for example we have taking an example of ICICI बैंक. ठीक है, ICICI बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस होंगे अक्रॉस द ग्लोब, ऐसा नो, Yes, sir. राइट. तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक 3-4 लोकेशंस. ओके, ये है हैदराबाद लोकेशन का, ये है भुवनेश्वर लोकेशन का, ये है फॉर एग्जांपल चेन्नई. ठीक है. सो दीज 3 लोकेशंस डेटा, जो हर एक बैंक में देर विल बी लॉट ऑफ डेटा जनरेटेड, राइट. हाउसिंग लोन का डेटा हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का डेटा हो सकता है, डेबिट कार्ड का डेटा हो सकता है,
ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट का हो सकता है, ऑटो लोन का हो सकता है, म्यूचुअल फंड का हो सकता है. एवरी डे लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन विल हैपन इन एवरी ब्रांच. यस और नो? या Yes, sir. Okay, guys, I need some response. Okay, so her rows there will be multiple data will be generated. As I said, housing loan, auto loan, mutual funds, okay, credit card, debit card, savings, FD. Okay, like this huge volume of data will be generated in every location. So every location जहां पे भी data generate हो रहा है, that will be stored in some place. कोई भी एक database में data store होता है. Database is nothing but it is a place where data will be stored. ठीक है? So for example, Hyderabad location में we have something called SQL Server database है. Bhubaneswar location में for example they are using Oracle. For example, Chennai location में they are using Snowflake ऐसा, या फिर MySQL ऐसा. They can use different databases. Okay, these are all same, इनका काम सेम है बट अलग अलग कंपनी का है. Okay, SQL Server Microsoft का है, Oracle का है. Like that, there for every company there will be different databases they are having. So इस location में they are using this one, in Bhubaneswar they are using Oracle, in Chennai they are using Snowflake. But everywhere all these kind of data is generated, right? Yes, no? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल अभी हैदराबाद ब्रांच हेड है. ओके, ही वांट्स टू एनालाइज कि उसके लोकेशन में कौन से कस्टमर का हाउसिंग लोन प्रीमियम पेंडिंग है, मतलब आ नहीं रहा है, या फिर ही वांट्स टू एनालाइज हाउ मच रेवेन्यू इज गेटिंग जनरेटेड फ्रॉम हाउसिंग लोन व्हेन कंपेयर्ड विद ऑटो लोन. ही वांट्स टू एनालाइज हाउ मच मनी ही इज जनरेटिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स. How many credit cards were sold in the last 1 year in his location? तो उसके लिए डेटा कहां से मिलेगा उसको? From his same location, right? Yes, no? Yes, sir. Right. But for example, तो इसके पास यहाँ पे डेटा है, so he can take the data and he can analyze this. For example, there is a country head. Okay, country head कोई है, ये कैसा एनालाइज करेगा? ही विल नॉट एनालाइज स्पेसिफिक टू वन लोकेशन, राइट? ही वांट्स टू एनालाइज कि हाउसिंग लोन कौन से लोकेशन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है. दैट मींस ही वांट्स टू कंपेयर हैदराबाद विद भुवनेश्वर एंड विद चेन्नई एंड विद मल्टीपल लोकेशंस. यस और नो? Yes, sir. Yes, So sir. he don't have all the data at one single place. His data, the kind of analysis he wants to do, जो वो analyze जो करना चाहता है, वो डेटा एक जगह अगर होता तो he can do the comparison. But अलग अलग जगह पे है डेटा, so he cannot compare, right? He cannot analyze that one. So for that lot of processing is required. So in real world में क्या करते हैं? They will bring all this data. ये जो हैदराबाद लोकेशन का डेटा है, उसके बाद भुवनेश्वर लोकेशन का जो डेटा जनरेट हुआ है, उसके बाद चेन्नई लोकेशन का जो डेटा जनरेट हुआ है, लाइक दिस इन मल्टीपल लोकेशंस डेटा इज देयर, नो? दे विल ब्रिंग ऑल द डेटा टू ए सिंगल लोकेशन. ओके, एक जगह पे वो लोग डेटा लेके आएंगे. इसको क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज लेयर. ठीक है? सो व्हाट दे विल डू, दे विल ब्रिंग ऑल द डेटा टू ए सिंगल लोकेशन. फॉलोइंग? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. So to bring the data from maybe Hyderabad में per day some 1 million of data is generated. Bhubaneswar में maybe that much not, maybe 1 lakh data is generated, या फिर 0.1 million data is generated. यहाँ पे maybe it is coming 1.5 million records. Okay, that much data is generated. डिपेंड्स ना, सिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कितने कस्टमर आ रहे हैं. So if it is a bigger city, the flow will be more. अगर flow ज्यादा है तो transactions will be more. Smaller city may be having lesser transaction, right? So depends on the volume of data generated in each and every location.
दे विल डिसाइड कि यहाँ से डेटा यहाँ पे एवरी डेली बेसिस में मुझे लाना है, या वीकली बेसिस में मुझे लाना है, या मंथली बेसिस में मुझे लाना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, मे बी एवरी 2 days once they will bring the data from this server, from this database to this database. यहाँ पे इतना ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, मे बी वीकली वन टाइम, मतलब 7 days once they will take out all the data from here and place it here. Maybe here they will do daily. Okay, तो ये जो frequency है, this will depend always the amount of data generated in that particular location. Clear? Yes, sir. Okay, so mostly this will happen in the night times, जैसे कि रात के 1 बजे 2 बजे, उस टाइम में ये लोग क्या करते हैं, वहां वहां का डेटा लेके यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, सो दैट इट विल नॉट इम्पैक्ट द कस्टमर। जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे भेजने हैं या लेने हैं, तो अगर उस टाइम में इफ दे आर डूइंग दिस प्रोसेस एंड ऑल, मे बी वी आर नॉट गोइंग टू गेट द फास्टनेस। ओके, बफर होता रहेगा, या फिर फेल हो जाएगा, या फिर कुछ और इश्यू होगा। Okay, that is not a good customer experience. So they will initiate this transferring of data, loading of data from one location to staging location at the time where the matlab transaction will not happen. Generally रात के टाइम में ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा नहीं होते हैं, so उस टाइम में ये लोग क्या करते हैं, they will bring all the data from one location to another location. So this process, यहाँ से यहाँ डेटा लाने के लिए we are going to use some टूल। ओके, उसको क्या बोलते हैं, ईटीएल टूल बोलते हैं। ओके, ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट द डेटा, ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड लोड। बट यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, जस्ट ईएल होता है, एक्सट्रैक्ट एंड लोड। यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, यहाँ पे लोड होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्शन एंड लोडिंग करने के लिए जो टूल्स चाहिए, देर आर मल्टीपल टूल्स इन द मार्केट, जैसे कि एसएसआईएस है, एडीएफ है, डेटा ब्रिक्स है, इंफॉर्मेटिका है। ओके, लाइक दिस मल्टीपल टूल्स आर देयर इन द मार्केट, टू डीबीटी है। okay, like this multiple tools are there in the market to extract the data and load the data into another location. Till now clear? Yes, गाइस sir. समस्ते समस्ते फॉलो करि परछो ना सिस्टम रे काहर किछि डाउट अछि टिके एटा हाई लेवल रे काहे कि ना देखो माने आई मीन वी डोंट वांट यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस सेशन। एटा गोटे ओवरऑल डेटा डेटा एनालिटिक्स केमती हुए, डेटा साइंस रे कोन हुए, डेटा इंजीनियरिंग रे कोन हुए, टू जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच वी आर लर्निंग, बट टिके हाई लेवल रे तुमको आइडिया दबा पे कि मोदी सिंपल लैंग्वेज रे तुमको कहबी तमरो लेट्स से बिजनेस तमर होची गोटे स्टोर होची कला मंदिर, कला मंदिर रे भुवनेश्वर रे हेड ऑफिस अछि। कला मंदिर आउ ओडिसा रे 20टा ब्रांच अछि, राइट। से 20टा ब्रांच रो हेड ऑफिस को डेटा आसिले तो मु एनालाइज करबी, डिसीजन नेबी केते सेल हेची, लेडीज गारमेंट रो केते हेची, जेंट्स रो केते हेची, किड्स रो केते हेची, मेन वीमेन कैटेगरी रे कोन हेची, मैरिज मैरिज सेगमेंट रे केते हेची, बर्थडे सेगमेंट रे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट पई हमें बाय करूचे। ओके, सो से सब एनालाइज करी, इफ आई गैदर और पुल द डेटा फ्रॉम अदर लोकेशंस, मु हेड ऑफिस को डेटा आसिले बेसिकली कला मंदिर हेड ऑफिस को यदि डेटा आसीबो ताहाले मु डिसीजन एनालाइज करबी कि केते मोर सेल्स हेची, को सेगमेंट रे केते सेल हेची, को ब्रांच मते अधिक बिजनेस देची, सेटा केमिति हबो जदि मते सब दिन मे बी सार जमती कहले डेटा फ्रिक्वेंसी, मु भी कहबी 2 दिन रे मते डेटा पठाई दियो, प्रति 2 दिन रे डेटा पठा, प्रति कोडी कहबी प्रति 7 दिन रे तुमे पठा, कोटी कहबी एवरीडे पठा, कहना अधिक अमाउंट रो डेटा जनरेट होची, सेल सेठी अधिक होची, मते डेली डेटा आसी गले आउ टिके मते डिसीजन नबा को इजी हबो। ये सेमती सार जो लेयर टा कहउचंदी डिफरेंट डिफरेंट गोटे ब्रांच रो मोर मे बी कोनस भी गोटे एग्जांपल नै पेरे, जेमति कला मंदिर कहले मे बी बिग बाजार रो हेड ऑफिस होची भुवनेश्वर रे, सो बिग बाजार जेते ओडिसा सारा ब्रांच अछि, आई नीड टू गेट द डेटा फ्रॉम ऑल द लोकेशंस, ऑल द ब्रांचेस, ताहाले मते एनालाइज करिया को इजी हबो, राइट। सो दैट इज व्हाट सर इज ट्राइंग टू कन्वे, राइट। एवरीबॉडी इज एबल टू फॉलो, समस्त बुझी परछो ना? इज देयर एनीवन? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो Everybody following, right? जहार 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 किछि भी डाउट होची गाइस, प्लीज फील फ्री टू आस्क, को भी पॉइंट रे डाउट हला। ओके, सो डू आस्क। ओके, Right. ओके, तो कौन है सब जगार एवरी लोकेशन रो डेटा आसिकरी वी आर स्टोरिंग इट इन वन सिंगल लोकेशन।
Okay, sethipainga for example if you want to take the statement माने बैंक स्टेटमेंट जदि लास्ट 5 months रो लास्ट 6 months रो तमे जदि स्टेटमेंट काढिया को चाहो you can get it from your app itself जो तमर आई मोबाइल ऐप हैला कि जहां भी ऐप अछि from there you can take out the information but for example तमको जदि लास्ट 5 years रो स्टेटमेंट बाहर करियार अछि नहले 2020 रे जनवरी मंथ रो स्टेटमेंट जदि तमको बाहर करियार अछि you will not be able to do from your app right से स्टेटमेंट केमिति मिलियो तुमको यू नीड टू विजिट द ब्रांच और रेज ए रिक्वेस्ट कि मते एई टाइम रो एई टाइम मझिरे ट्रांजैक्शन रो स्टेटमेंट मते बाहर करियर अछि व्हेन यू रेज दैट रिक्वेस्ट then bank will say we need 2 days of time to get your information and they will give you the information after 2 days or 1 week whatever their timeline is and they are going to charge you for that they may charge 100 rupees ki 200 rupees ki 50 rupees ki 40 rupees jaha bhi kichi charge kariye to give you the data why this happens because now the data is not available here not if all the data has been brought from here to here तो तांकर जो सिस्टम ओएलटी माने जोठी डेटा जनरेट होची से डेटाबेस रे आउ डेटा नाही सेटा ऑलरेडी वी हैव रिमूव्ड फ्रॉम देयर एंड सेंट इट टू ए डिफरेंट लोकेशन so you cannot take it you need to raise a request they will come here ए लेयर रे जो डेटा अछि से डेटा को क्वेरी करिकरी तापर से माने they are going to give you the statement right and that requires time following Yes, sir. right so once all the data comes here okay once all the data comes here then what they will do Sir, Sanjeev has one question. Sanjeev yeah is asking ki why doesn't each branch do the data analysis then forward it to the bronze layer? ସମସ୍ତେ individually data analysis କରିକି କାହିଁକି bronze layer କୁ ପଠଉନାହାନ୍ତି? Can you କେମିତି please? କରିବେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଜ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଡ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ नो कि मोर माने हाउसिंग लोन in which location I am getting the highest. So when I have all the data in one place, then only I can tell that this location is having at the highest level, right? If in each location there is how they will do. Go to Hyderabad location, no, their loan amount is 1 lakh. In Bhubaneswar location, it is 50,000. In Chennai location, it is 70,000. So when I have all the information at one place, then only I can do the analysis. If it is scattered in different locations, I will not be able to do. And even though you can do it now it is a even more complicated work na jedi mo Hyderabad रे गोटे लोक करियो भुवनेश्वर आउ किए करियो चेन्नई रे आउ जने करियो what he is doing he doesn't know what this guy is doing the other guy doesn't know okay in that way it will not happen you have to you should have all the data at one single place गोटे टैंक रे पानी अछि हैला गोटे बड़ टैंक रे you have okay let's take a very simple example for example I am ordering you are ordering something from Amazon okay you are ordering a shoes or jeans or something from Amazon okay that will come from one shop right it might be in Bangalore it might be in Delhi it might be in Hyderabad somewhere from there it has to come to your location do you think from Hyderabad location from that shop directly it will come to your home No, sir. so how does it comes first of all from every location जो order है everything will come to one particular location that is called warehouse right Amazon लो गोटे warehouse थिबो भुवनेश्वर लोकेशन रे गोटे warehouse थिबो सब जाक प्रोडक्ट्स आगे दिल्ली रो जो प्रोडक्ट आसियार अछि हैदराबाद रो जो प्रोडक्ट आसियार अछि एमती मल्टीपल लोकेशंस रो जो प्रोडक्ट आसियार अछि एवरीथिंग विल रीच द भुवनेश्वर वेयरहाउस फर्स्ट गोटे जगह रे सब किछि रहिबो तापरे सेइटू इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू different houses right yes or no Yes, sir. okay because that is the easier way if they directly try to send it to from the shop to your home that is going to be very challenging and you will definitely miss also following Yes, sir. Sanjeev did you follow बुझी ହେଲା ना still you have questions
Yes, he said yes. Right. Okay, so it is asila, but still what is happening here is this data is not yet cleaned. Cleaned nuha mane kono? For example, Hyderabad location re customer table achi. Okay, there is a customer table. Joti customer data is getting stored. Okay, for example, location, gender. Okay, these are the three columns. So customer one, location Hyderabad, gender male. Emiti they are storing the data. Okay. Yes, no? Yes, sir. Then another customer, same location and gender F. This is what they are showing in Hyderabad location. Similarly, in another location, they are storing that this guy made a sale of, for example, 100, 120. Similarly, here, instead of cost, they are entering, here it is only first name, for example, here it is the full name. Okay, location also, for example, they are mentioning the entire name. And gender also they are mentioning the full name. Sales 90 and 70. Now, for example, if I want to analyze these two things, Mate Janiyar Ochi, from male customers, how much sales is happening, from female customers, how many sales is happening in both the locations. What I will do, I need to have all the data at single place. Yes or no? Yes, sir. So, for example, I am bringing the data from here to here. And again, I am bringing the data, this data also from here to here. Okay. So male or female row, I want to know how, what is the sale happening. For example, if I analyze here, I will create a pivot table. Now, gender and sales. You see what is happening here. Actually, the female should be 120 plus 70. It should be 190. Male should be 190. Yes or no? Overall female sale kete hochi? Hello? Yes, are you following? 190, sir. 190, right? Actually, female row sale kete hai? This is female sale and this is also female sale, right? 120 plus 70. For example, here I make 80. 120 plus 80. Female sale is 180. Male sale is 100 plus 90, which is 190, right? But here what is happening? Here what is happening? It is showing in different mane female alga dekhochi, right? This is not correct. But for example, if I এই ডেটা যেটা আছে এটা মু ক্লিন করিকি রাখিবি ক্লিন করিকি রাখিয়া মানে কোন ফর এক্সাম্পল এই ডেটা যেতলে এঠু মু এটি when I am bringing it from here to here, instead of m I am mentioning male. I am transforming the data, and here also I am transforming the data. Then from another location also I am bringing the data and placing it here. That means I am standardizing the data, right? It is standard format re nathila. Gote location re alga prakar thila, ଆଉ ଗୋଟେ location ରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର enter ହଉଥିଲା data. So once I make it in the standardized format, and now if I want to do the analysis, if I want to do the analysis on top of this standardized data or cleaned data, now if I take gender in rows,
and sales in column. Now this is showing me the correct result. Yes or no? When data was not in cleaned format or not in standard format, this is what you are seeing when you analyze. But when you have standardized the data or you have done the cleaning of the data, then you are showing the data in this format. Totally same. But it is showing different. Which one is correct? Which one is correct? The second one. Sir, the second one. Second one, right? So to do the analysis in a proper way, we need the data also in a proper cleaned format, or else we will not get the correct results. Okay, from here I am not able to understand what is the total female sales, what is the total male sales. But from here I can clearly understand that female sale is 200, male sale is 190. Right? So for that reason, what they will do in real time, they will create another layer here, which is called as silver layer. Okay. And here what will happen? Here you will see only the cleaned data or standard data. Okay, silver layer रे कौन था है? Only the cleaned data will be there. Here it will be directly dumped. एठी जहाँ अच्छी same एठी भी थिबो. एठी जहाँ अच्छी एठी भी same ही थिबो. एठी जहाँ अच्छी एठी भी same ही थिबो. But from moving from bronze layer to silver layer, we will do the cleaning. एठी कौन हुए? ETL हुए. What happens here? ETL happens. Here only E and L. Here just extract and load. But here what happens? Extract, transform and load. Right? Yes, no? Yes, sir. So here also out of these any one of the tool will be used to move the data from one location to another location. Again some of the ETL tool will be used. Then again what will happen? They will move the data into another layer called gold layer. Okay, called gold layer. Here what happens basically? Aggregated data. Aggregated data means what? We are having housing loan, auto loan, mutual fund, everything is combined here. Here what they will do, they will all three locations, Hyderabad, Bhubaneswar or Chennai, all three locations, everything related to housing loan data, they will keep it in a single table. Okay, what they will do? From all the locations, all the data related to housing loan will be kept in one single table. Similarly, all the data related to mutual funds will be kept in another schema or another table. Following? Yes, Yes, no? sir. Yes, Like sir. that, they will create small fact and dimension tables here. Okay, housing loan paying alga schema, mutual funds paying alga schema, and credit card paying alga, debit card paying alga. Like this, they will create small different tables. What is the use of this one is when, for example, I am a data analyst, I want to create a dashboard which is related to housing loan. If I don't create like this, then I will have access to everything. I will have access to housing loan, auto loan, mutual fund, credit card, debit card, savings, FD, everything I will have, which I don't need. Right? If I am working on housing loan data, then I just need the access to the housing loan only. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Goal layer also will do group by. Group by mane kon aggregated mane kono group by. What does this mean? For example, etimo pakare data daily wise ochi. For example, every day data we are generating like January 1st, 2025, what happened? What is the sale? 100 is my sale or housing loan, whatever the fact table. I am taking sales, okay, for easy understanding. Okay, like that every day, whatever happens, we are mentioning it here. 29, 30, okay. Daily, whatever happens, we are loading it here. Okay, so for example,
I'm just taking random values. Okay. So how many rows are there for us for 3 months? For 3 months, how many rows are there? 90 rows are there, right? 90 days means 90 rows, right? Yes, Yes or no? sir. Yes, sir. But for analysis, जो analysis मु करिया को जाऊची, maybe I am not going to do daily wise analysis. I want to know monthly analysis. Okay. The data analyst who is going to do the analysis, he may want to do monthly analysis. Mane every month what is the sale happened. Only that analysis only we want to do. I don't want to know daily kaun hochi, daily what is happening, that I don't want to know. Requirement is to do analysis at the month level. Following? Yes or Yes, no? sir. Yes, So sir. I do not need this much of data. This is in the silver layer. This much of data is in the silver layer. So what we will do, we will transform this data in the gold layer. हमें gold layer को जितने table को पठेवा, what we will do, we will just mention month and sales, Jan, Feb, and March. So January sales कौन होगा? It will be from here till here. Right? February sales, what will be the February sales? Starting from here till here. March sales, what it will be? Starting from here till the end. So I will give the data like this to the data analyst. Mane kono? हमें जो तोले daily wise, if you are not analyzing the data, then no point of giving this much of information. Instead of that, I will aggregate the data and I will give it to the data analyst. Right? Both are same only, right? If I do a sum here, what is the total I am getting? 13,005. If I do a summation here, same value I am getting. Yes or no? Yes, sir. So we will give only the required information in the gold layer. Here we might be having so much of data. But in the gold layer, only the data which is required for data analysis, that much data only we will give by aggregating the data. Following? Yes, sir. Okay. And from here, what will happen? For example, a person is working on house mutual funds data. He will connect to this one and then he will build his dashboard. या फिर he will do the data analysis here. Following? If there is another team who wants to work on housing loan, they will connect to this one and they will create their own dashboard. So security is there. We are not allowing everybody to connect to all the data. And also we are giving only the limited data. How much ever is required, only that much information only we are giving it to them. We are not giving all the information. Maybe here we have employee and salary. Maybe salary column is not is sensitive data, right? We should not provide the salary information to everybody. So while creating a table in the gold layer, I will not include the salary column. Following? Yes, sir. So only the required information will be available in the gold layer. Jitna information, jetik information data analyst ko darkar, setik information we will keep it in the gold layer. Not everything we will keep in the gold layer. Okay. So now from here data analyst can take and create his reports and all. So this entire thing starting from here to here. Starting from here to here,
shape fill, no fill, shape outline. Okay, the entire thing which is in this box, okay, this entire thing is called as data engineering. Okay, the team who does all this ETL, okay, bringing the data from here to here, from here to here, clean the data, from here to here, only the aggregated data. Okay, all this work, the team which does is called as data engineering team. And the person who does this is called as data engineer. Clear? Yes, sir. And the skill set required to do all these things are definitely you should be very, very good at SQL language, because always you are talking with databases only. Everywhere databases are only there, right? So you should be very, very good with SQL. Then you should be very good with data warehouse concepts. Okay, this is called as data warehouse. Okay, so data warehouse kemiti bonne arochi. What are the rules we need to follow? What is the primary key? What is the foreign key? What is the fact table? What is the dimension table? What is the star schema? So many concepts are there. Okay, so those concepts and all we should be very good. We should know some ETL tool. Okay, some ETL tool is mandatory to move the data from one place to another place. SSIS key, ADF key, DB, Databricks, Informatica, DBT. Some of the ETL, one ETL tool, any one ETL tool you should know to do the data engineering work. And then if you know Python, then it is beneficial. So these three are must and should you should know to become a data engineer. Clear? Yes, sir. Okay. And then from here, from whatever the data engineer has given, data analyst will take. Okay, data analyst will take and create his own dashboard. Data analyst क्या करता है? Data engineer जो बना के दिया है उसको यूज करके he will do his analysis. This is called as data analytics. And the person who does is called as data analyst. The person who does is called as data analyst. इसके लिए क्या क्या स्किल सेट चाहिए? Definitely you need to know one BI tool, either Power BI, yeah, either Tableau, Cognos BI, ClickView, ClickSense, so many are there. But I would prefer Power BI. And then you need to know SQL also, because you are communicating with databases always, right? So you need to know SQL as well, but may not be at the level of a data engineer. No, data engineer को जितना level पे SQL चाहिए, data analyst को उतना level पे नहीं चाहिए, but still he should know the how to write the SQL queries. Power BI must and should, advanced level पे Power BI चाहिए, and SQL at average level पे SQL आना चाहिए. And then Excel is something mandatory everywhere. यहाँ पे भी Excel चाहिए, यहाँ पे भी Excel चाहिए. Nobody is going to ask if आपको Excel आता है या नहीं आता है. It is understood that everybody should know Excel. Okay, and then NumPy, Pandas, Matplotlib libraries in Python. Python में 200 plus libraries are there. Okay, Python में 200 plus libraries are there. But for data analysts, these are the three libraries which we should know. Okay, so this is the priority wise skill set we need to have to become a data analyst. Then similarly, there is one more team. Okay, एक और team होता है जो यहीं से data लेता है and they create what they do. They create machine learning, artificial intelligence models वो लोग बनाते हैं. Okay, what is this team called as? Anybody? ML engineer. Sorry? ML engineer. Yeah, you can say ML engineer. या फिर the domain is called as data science. Okay, the person who does this all this called a data scientist. इसके लिए skill set क्या चाहिए? Definitely you need to know some programming language, preferably
पाइथन, और इसमें भी बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं दैट वी नीड टू नो, बट दिस इज कंप्लीट प्रोग्रामिंग. What is the difference between data analytics and data science? Anybody? What is the difference between data analytics and data science? Analysis Hello, to sir. the analysis part, but data science to the prediction, what Very good. happened next. Like, वेरी गुड. ओके. डेटा एनालिस्ट क्या करता है? जो डेटा हमारे पास है उसी को दिखाता है. जैसे यहाँ पे है, जो डेटा हमारे पास था उसी को हम लोग दिखा रहे हैं. बट डेटा साइंस क्या करता है? जो हमारा मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल मॉडल बना के ये लोग प्रेडिक्ट करेंगे 2026 में What will फीमेल happen सेल next? क्या हो सकता है, Hello. 2026 में मेल का सेल क्या हो सकता है. राइट. Right, sir. ओके. सो दिस इज मेजरली फॉर प्रिडिक्शन. दिस इज ओनली फॉर द हिस्टोरिकल डेटा को यूज करके टू क्रिएट नाइस रिपोर्ट्स जो कि इजी टू कंज्यूम, इजी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए ये काम में आएगा. So these are the three different major roles in data field. One is data engineering, another one is data analytics, and the third one is data science. There is one more thing called as business analytics. Okay, एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं? Business analytics. And the person who does that is called as business analyst. BA. बीए का काम क्या होता है? जब आप एक कंपनी के ज्वाइन हो गए, क्लाइंट है आपका, ओके, नेस्ले इज योर क्लाइंट, ओके, एंड यू आर द डेवलपर फ्रॉम टीसीएस. ओके, आप डेटा एनालिस्ट हो और ये क्लाइंट है. तो आपको कौन क्या काम करना है, कौन बताएगा आपको? आपको क्या डेवलप करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब कौन बताएगा? जिसके लिए काम करते हो वही बताएगा ना, क्लाइंट ही बताएगा ना, आपका कस्टमर ही बताएगा. राइट? ऐसा नो? Yes, sir. Okay, so basically this for Nestle you need to create a dashboard. So requirement Nestle देगा. For example, this is not Nestle. For example, let's say Star Health. Star Health आपका कस्टमर है एंड यू आर द डेटा एनालिस्ट. बट ये इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आपको पता नहीं है. प्रीमियम क्या होता है, ये प्रीमियम क्या होता है, एक्सीडेंटल प्रीमियम क्या होता है, ऑल दिस टर्मिनोलॉजी यू डोंट अंडरस्टैंड. राइट? नेसेसरली इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड अंडरस्टैंड एवरी डोमेन. ऐसा नो? फाइनेंस के कुछ टर्मिनोलॉजी हो सकते हैं, जैसे क्रेडिट बैलेंस हो गया, डेबिट हो गया, ग्रॉस मार्जिन हो गया, ग्रॉस सेल्स हो गया, जो भी है. मे बी यू मे नॉट अंडरस्टैंड ऑल द बिजनेस टर्मिनोलॉजी. यस? नो? Yes, sir. सो देर विल बी ए पर्सन कॉल्ड बिजनेस एनालिस्ट जिसके पास डोमेन नॉलेज होता है. मतलब इसको बिजनेस के बारे में सब पता होता है. मतलब इंश्योरेंस कैसे होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, या जो भी है क्लाइंट का डेटा जो है उसके बारे में इसके पास पूरा नॉलेज होता है. और उसके साथ थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज भी होता है. टेक्निकल मतलब जैसे पावर बीआई, सीक्वल, ओके, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आल्सो. एंड एक्सेल शुड बी वेरी गुड. एक्सेल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड कम्युनिकेशन आल्सो, इट शुड बी वेरी गुड. तो ये बीए क्या करता है? क्लाइंट के पास से रिक्वायरमेंट लेता है, इसको क्या चाहिए, दिस गाय विल अंडरस्टैंड. एंड देन अगर ये कुछ ऐसा बोल रहा है जो कि पावर बीआई में पॉसिबल नहीं है, देन ही शुड पुश बैक. ही और शी शुड टेल द क्लाइंट दैट नहीं, आप जो बोल रहे हो दैट इज नॉट पॉसिबल इन पावर बीआई टेक्निकली, मे बी वी विल डू इट इन ए डिफरेंट वे. इसको समझाना है. उसके बाद पूरा मतलब वंस एवरी रिक्वायरमेंट हैज बीन गैदर्ड, देन ही विल पास ऑन दैट वन टू द डेटा एनालिस्ट. इसको समझाएगा क्या करना है, कैसे करना है. अगर इसको कुछ डाउट्स है, ये फिर से बीए को पूछेगा, बीए जाके क्लाइंट को पूछेगा. तो दैट मीन्स बीए इज बेसिकली द ब्रिज बिटवीन
client and developer. Actually, last time मते गोटे दिटा क्वेश्चन आस्तेला बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स विषय रे गाइस आपण माने बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स करि परिबे आमे से गोटा आमे बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स भी ऑफर करूछु बट एक्चुअली बिजनेस एनालिस्ट जो रोल टा इट इज नॉट एन एंट्री लेवल रोल सर जेमते कहले क्लाइंट टू अंडरस्टैंड करिया पई रिक्वायरमेंट यू शुड हैव द बिजनेस नॉलेज आल्सो राइट तमें जो क्लाइंट Yes. संगे कथबार्ता हम गोटे बैंकिंग क्लाइंट संगे कथा हम कि गोटे इंश्योरेंस क्लाइंट संगे कथा हम तुम इंश्योरेंस विषय जानिन इंश्योरेंस प्रीमियम केमिति कैलकुलेट हुए इंश्योरेंस केमिति लेट्स डिस्बर्स लोन रे डिस्बर्स केमिति हम अमाउंट आमे जदि से बिजनेस ऊपर मोर नॉलेज नै मु क्लाइंट मैनेजर संगे जाई कथा हे परिबिनी राइट जदि मते स्टार हेल्थ संगे कथबार्ता हबार अछि मु लाइफ इंश्योरेंस विषय ईच एंड एवरीथिंग जानिया दरकार ना केमिति लाइफ इंश्योरेंस टा प्रीमियम केमती निया जाए डिस्पर्स जदि कहार किसी हेल्थ इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस है पे केमती हुए मुझे बिजनेस टाको बुझिया दरकार आ से बिजनेस बुझिया को तुमको वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष टाइम लगिवो एते बड़ सिस्टम को बुझिया को लेट्स से जदि मु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो बैंकिंग सिस्टम रिटेल बैंकिंग बुझिया को चेष्टा करी मते 10 वर्ष लागिवो टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल तांकर केते जिंस अछि लोन्स अछि डिपॉजिट्स अछि इंटरनेट बैंकिंग अछि फोन बैंकिंग अछि आमे गोटे एक्चुअली सब इंजीनियर्स गोटे गोटे स्मॉल पार्ट रे काम करते कारण गोटे गोटे टीम रे 10,000 पिला काम करते 5,000 पिला काम करते केते बड़ सिस्टम यू कैन इमेजिन तुम कह कि नहीं पूरा एक्सपर्ट हो दैट इज नॉट पॉसिबल ओवरनाइट रे हबनी तुम 2 वर्ष 3 वर्ष गोटे मॉड्यूल रे काम कले गोटे एरिया रे काम कले तुम 2-3 वर्ष काम कला पर से मोर सांग मान अच्छा डिपोजिट रे 6 वर्ष है काम कर डिफरेंट टाइप्स रो डिपोजिट अकाउंट कि जन सांग अच्छा लोन्स रे काम कर कि जन सांग अच्छा खाली इंटरनेट बैंकिंग रे लाइफ लॉन्ग तांकर काम कर किए अच्छा फोन बैंकिंग रे किए यूपीआई पार्ट रे काम कर फोन पे संगे काम करिया तो बहुत बड़ा सिस्टम आ तुम यदि बिजनेस एनालिस्ट हम फास्ट रे तुमको ए सब टेक्निकल बेसिकली एक्सेल सिक्वेल पावर बीआई तो मस्ट तुम जो ठीक जाओ माने आईटी रे एनी जॉब रोल रे जाओ साजन कहले एक्सेल माने एमती जनरल अजम्पशन दे तुम एक्सेल जानिच भलसे आ डेटाबेस तुम प्रोडक्ट मैनेजर हुआ डेटा एनालिस्ट हुआ सॉफ्टवेयर टेस्टर हुआ डेवलपर हुआ डेटाबेस समस्त दरकार इन एनी रोल इन आईटी पावर बीआई आजिका डेट समस्त विजुअलाइजेशन डिसीजन मेकिंग की यूज कर तो से ए सब तुम जेकोसी जॉब रोल रे जाओ ए 3टा स्किल आजिका डेट रे मैंडेटरी इट इज एक्सपेक्टेड दैट तुम एगुड़ा सब बेसिक जिन जानिच ओके तापरे बिजनेस एनालिसिस ठीक अच्छे बिजनेस एनालिटिक्स रे तुम कौन कर कोर्स शिखिल सब कल बट तुम मे भी गोटे जूनियर इंटर्न हिसाब से जॉइन हो पार ना किसी दिन काम कला जदि मैनेजर फील कला जे तुम पोटेंशियल अच्छी तुम बहुत इंटरेस्टेड क्लाइंट संगे कथा ता रिक्वायरमेंट बुझा से रोल रे काम करने को डेफिनेटली इंटरनली से पुश हम कि ना ही इज वेरी गुड एट ही और शी इज वेरी गुड एट मैनेजिंग क्लाइंट्स और टॉकिंग टू क्लाइंट्स भल से बुझुची भल से रिक्वायरमेंट आनिकी ड्राफ्ट करुच्ची तो डेफिनेटली वर्ष 2 वर्ष भीतर से रोल को तुम मूव हो तुम निजर टी पर्सनालीटी डेवलपमेंट करिया दरकार तुम कथा कम्युनिकेशन यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन कम्युनिकेशन कहीं गोटे 30 वर्षर बैंकिंग एक्सपर्ट सांगे तुम कथा हो माने तुम कथबार्ता भी अवश्य इंडिया रे हेले तुमको हिंदी तुम हिंदी रे कथा भी चलो बट इफ इंटरनेशनल क्लाइंट हो देन यू विल हैव टू टॉक टू द क्लाइंट इन इंग्लिश कि बिजनेस टीम सांगे इंग्लिश रे कथा पड़ो सो होप इट इज क्लियर राइट समस्ते फॉलो करि पारुछ राइट यस नो Yes, sir. ओके सो करिपारिबो किछि इश्यू नाही बट ओनली थिंग इज तमे से रोल रे काम करिया को यू शुड स्पेंड सम टाइम इन द टेक्निकल वर्ल्ड तमे डेटा रे काम करिया पड़े 6 मास वर्ष बिजनेस बुझिया पड़ियो मु बिजनेस न बुझी कि डायरेक्ट जाके क्लाइंट को जदी मते क्लाइंट फेसिंग रोल रे पके देले मु तांग सार कथा ही परिबनी सो मुझे मतलब स्विस बैंक रे काम करथली सो आई वाज ए क्यूए लीड क्वालिटी एश्योरेंस टीम रो लीड थली मते डायरेक्टली 30 35 वर्ष 30 वर्ष एक्सपीरियंस लोक सारे पके देले मीटिंग इट वाज रियली टफ कहीं कि ना मु बिजनेस बुझुनी मोर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्रेडिंग शेयर ए सब जिन मोर आईडिया ही नहीं I am technically very good, but I'm not, I don't have that business knowledge. Subject matter expert मुन में तो it will take time. वर्ष 2 वर्ष काम कला पर से टर्म गुड़ा से जार्गन गुड़ा तुम बुझे को चेष्टा करियो हैला आउ कहार किछि जेनरिक क्वेश्चन अछि विल बी एबल टू आंसर कारण I सार think बहुत one question is there from Sanjeev. Is data analytics plus domain knowledge is business analytics? Not ये exactly. Data देखो analyst रो जेतिकी technical knowledge दरकार, data analysis रो knowledge दरकार, that much business analyst not required. Okay, सेते deep रे business analyst को दरकार नहीं, but still definitely he should have that average level of knowledge.
କାହିଁକି ନା business analyst is not going to do all the data analytics related work. He may be doing a demo, माने गोटे छोटो प्रोटोटाइप बोलिए एक्सेल रे करियो कि एई जो प्रोजेक्ट आमे करिया को जाउछु which is going to take 3 months or 4 months or 5 months, सेटा गोटे हेई पारुची ना नाही सेटा जानिया पाएंगे एक्सेल रे गोटे प्रोटोटाइप बनेबो. जेमती गोटे प्रोडक्ट लॉन्च करियार अछि, गोटे कार लॉन्च करियार अछि, गोटे कार मैन्युफैक्चर करियार अछि, आगे गोटे प्रोटोटाइप बनांती ना छोटो बने कि देखंते वेदर इट इज feasible or not. So to understand whether it is feasible or not, they need to create a small prototype. So business analyst may do that prototype to see whether it is feasible or not. But he or she is not going to develop the entire report. That is not his area. Okay, but still, definitely some kind of technical knowledge is definitely required for business analyst along with the domain knowledge. Let's say, for example, business analyst तुमको requirement देला, okay, business analyst requirement देला, कहला कि मते estimation दियो ये report ये requirement टा develop करिया को केते समय लागिवो, तमे जानि सुनी buffer रखी कि कहबे कि 10 दिन लागिवो, जेहेतु business analyst रो already से tool और technology ऊपर knowledge अछि सी तुमको challenge करिवो, why 10 days? This is a small requirement, एटा तुमे 5 days रे कि 3 days रे complete करि परिवो, why you have given this estimation? सेही सब जिंसो जानिले तांकु help हबो कि तांकु किए माने तेमती कहंती कि तांकु किए बकरा न बनै दो कि नाही अननेसेसरी 10 दिन तुम तो मन इच्छा कहि दो गोटे छोट रिक्वायरमेंट आस्तो तुम कहने एता मासे लागिवो, बट क्लाइंट राजी नहीं, क्लाइंट को जल्दी सारियार अछि, बीए कहबो काहे कि एटा एते समय कोन पे लागिवो, एटा तो मो पावर बीए एटा करियर अछि, एसक्यूएल एटा करियर अछि, से ही अंडरस्टैंड्स दैट, he understands this language, right? से जेहेतु बुझुची तमे ताको माने बकरा बनै परिबोनी कि नाही एते माने he will say that okay it will take 3 days or 4 days of time, टिके माने डिस्कशन नेगोशिएशन हो, बट एमिति नाही कि तमे जोड़ा दउछ ताको किछि दरकार पड़िबोनी. देखो संजीव, डेटा एनालिटिक्स रे मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स रो जहाँ बेसिक दरकार वी विल कवर इट इन जो मैथमेटिकल फंक्शंस अच्छी, बेसिक फंक्शंस, एग्रीगेटेड फंक्शंस, एगुड़ा सब टूल्स रे ही कवर हो जिवो. बट डेटा साइंस रे जते तुम फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल करिवो, सो मैथ स्टार्ट्स, प्रोबेबिलिटी एगुड़ा सब दरकार हबो डेटा साइंस रे. डेटा एनालिटिक्स रे नॉट मच रिक्वायर्ड एट ऑल. सुजी सर, व्हाट डू यू से? Yeah, in data analytics, you just need how sum works, how max works, how minimum works, how average works. Okay, only this, how count works, only 5-6 things only you require. With that only we are going to do so many things. But only the arithmetic operators या फिर sum functions ये गुरक को ही हमको दरकार data analytics रे. Sir, Actually we have students from ଆଉ କାହାର କିଛି question ଥିଲା? sir, ଗୋଟେ question ଥିଲା. Sir, ଆମର जो data analytics projects गुड़ाक will be assigned by the BA, right? It depends. BA सब project रे न था. If suppose it is a sales project, तमे निजे बुझी पारुचो sales रे कौन था, quantity था, sales था, profit था, margin था, यही सब था. You know, you are able to understand their thing. Then business analyst will not be there in picture. Directly you will be connecting with the client. Okay, sir. Okay, not every project will require a business analyst. Only some critical project joti domain knowledge or definitely requirement achi. In those situations only business analyst will come into picture, or else 80% of the projects business analyst will not be there. Okay, sir. Okay, and another point regarding business analyst, jemti sir कहले कि developer यदि basic time दे दउची, business analyst should understand कि एते time लागिया कथा नो. Similarly, other way also, like client may say कि मते ये requirement one week रे दरकार कि 1 month रे दरकार. So business analyst should have the knowledge to challenge him, saying that these are the difficulties in this project, so we will not be able to deliver in 1 month. We may need 1.5 month of time. Right? Correct. कहीं ना क्लाइंट तो कहबो ना मते संगे संगे दे दियो बोली कहबो, राइट? सो इन दैट वे बिजनेस एनालिस्ट शुड अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी, द रिक्वायरमेंट रो जदी बुझुची और टेक्निकली फिजिबल कि नहीं से जदी बुझुची, देन ही कैन चैलेंज द क्लाइंट इटसेल्फ. रैंडमली तो कहि परियो नहीं 1 मंथ कम टाइम हमको 2 मास दरकार एमती कहि परियो ना. सो ही शुड टॉक टेक्निकली. सी दिस इज द रिक्वायरमेंट वेयर इट इज that direct option is not there in Power BI. We may have to find a work around. We may have to do research on these things. So I may need another 1 week extra time, या फिर 2 weeks extra time. So like that technically he should be able to talk.
जदि ताको टेक्निकली कथा हेबो सेतल ही क्लाइंट कन्विंस हबो रैंडमली कहले क्लाइंट कन्विंस हबोनी तो जदि टेक्निकली कथा हबार अछि तुम पाखरे टेक्निकल नॉलेज भी रहया दरकार सर गोटे डेटा एनालिस्ट रो एंट्री लेवल रोल गुडा कोन थाए सर एंट्री लेवल एमती न थाए एवरी डेटा एनालिस्ट नीड टू नो पावर बीआई SQL एक्सेल दिस थ्री आर मैंडेटरी पाइथन रो नंपा एटा दरकार बट इट डिपेंड जदि मोर गोटे प्रोजेक्ट होची जोदि बेसी क्रिटिकलिटी नाही ओके सो आई विल गो फॉर ए जूनियर एनालिस्ट जाको मते कम पे करिया को पड़ियो बट मोर प्रोजेक्ट रे डिफिकल्टी अधिका अच्छी और नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आर सो मेनी मे बी आई कैन नॉट डिपेंड ऑन ए जूनियर एनालिस्ट आई विल गो फॉर ए सीनियर एनालिस्ट आउ दीटा जूनियर एनालिस्ट पाखु जीबी तो इट डिपेंड एक गोटे घर बनौछ तमे सो यू मे नीड डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉइज राइट माने समस्ते डिजाइन कला वालिया रहले काम किए करियो जदि डिजाइन कला वाला नाही काम किए केमित करियो सो वी नीड द आर्किटेक्ट आल्सो we need the supervisor also we need the person who builds the house also right in a similar way am project रे भी same level गोटे senior दरकार हबो मे बी दीटा junior दरकार हेबे but everybody is going to do the same work मे बी जो easy work गुरा को junior को दिया जाए जो critical work गुरा को टिके senior को दिया जाए but still you need to know power bi still you need to know sql still you need to know excel करेक्ट अब जदि तुमको लेट्स से माने डेटा एनालिटिक्स टूल शिखियार अच्छी माने माने बेसिकली चारटा स्टैंडर्ड टूल एक्सेल जानिया दरकार एसक्यूएल जानिया दरकार पावर बीआई जानिया दरकार पाइथन जानिया दरकार आ सबुठु दीटा स्ट्रांग टूल होची एसक्यूएल और पावर बीआई ये दुटार मास्टरी करिया दरकार पाइथन टिके लाइट नोट रे नेले चलिबो एक्सेल ठीक ठाक अच्छे एक्सेल तुम टिके टिके शिखि देले भी चलिबो बट ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜବ୍ କରିବ ନା ଏମିତି ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଚାରିଟା ଟୁଲ୍ ମିଳିବ ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମେ କାମ କରୁଛ ତୁମକୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଚାରିଟା ଟୁଲ୍ରେ ହିଁ କାମ ମିଳିବ କ୍ଲାଇଣ୍ଟର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମନେକର TCS ହେଉଛି ତୁମର କମ୍ପାନୀ ତୁମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଛ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଖରେ ମାନେ ଲେଟ୍ସ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ସିଏ କହିବ ମୋ କାମ ଖାଲି ଏକ୍ସେଲ୍ରେ କରିକି ଦିଅ ତୁମକୁ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ବି ଡେଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବଜେଟ୍ ଅଛି तुमको लेट्स तुमको कहबे कि नहीं एसक्यूएल और पावर बीआई रे काम करियार अछि तो तुम डेटा एनालिटिक्स स्किल शिखिया को टूल सब शिखिया दरकार बट तुम काम कला को खाली पावर बीआई रे भी काम मिल पारिबो पावर बीआई प्लस एसक्यूएल रे मिल पारिबो खाली एक्सेल रे भी मिल पारिबो अगेन पाइथन रे भी मिल पारिबो एमती बट मोस्ट क्रिटिकल टूल्स होउछन्ती इंपोर्टेंट टूल्स होउछन्ती एसक्यूएल और पावर बीआई हैला बट अगेन डिपेंड करबो क्लाइंट पाखरे बजेट अछि कि नहीं हैला जेते भी गोटे भलो एग्जांपल मु कहबी लेट्स से तमें गोटे बढ़िया रेस्टोरेंट को जाऊच जाइच है तुम पाखे बजेट अच्छी माने मे बी दाल चावल खाया मे बी आई वुड से रोटी दाल फ्राए खाया तुमको से जिते भी भल कहे कि सर आम पाखे बढ़िया मटन अच्छी वेज वाला कह सर बढ़िया पूरा पूरा देसी बहुत बढ़िया पनीर अच्छी मशरूम अच्छी लोकल मशरूम आम बहुत बढ़िया डिश बनाऊ अरे तुम पकेट रो 50 टंका अच्छी तुम रोटी डालमा खाया पैसा अच्छी रोटी तड़का खाया पैसा अच्छी तुमको से जिते बढ़िया कहले भी तुम यूज कर एक्जाक्टली क्लाइंट पाखे जो गोटे टाइम बजेट ना तुम कह कि सर एसक्यूएल पावर बी यूज करके तुम बहुत बढ़िया इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कर बहुत ही माने प्रोफेशनल रिपोर्ट कर सी राजी हेबनी कह ना मोर बजेट अलाउ करनी यू नाउ गो फॉर एनालिटिक्स आई मीन विजुअलाइजेशन सब मोर डेटा स्मॉल अच्छी तुम एक्सेल रे कर दियो होला एमिति अछंती पिला 25 लाख 30 लाख पैकेज पाउछंती किंतु खाली एक्सेल रे भी काम करछंती एमिति सिचुएशंस अछि किंतु क्रिटिकल सबुठ इंपोर्टेंट टूल्स होची ए दिटा एसक्यूएल एंड पावर बीआई एटा मास्टर करियर अछि एटा सबुठ तुमको यूज हो डेटा साइंस रे दरकार हो डेटा इंजीनियरिंग रे भी आजिकली डेटा एनालिटिक्स तो डेफिनेटली बट डेटा इंजीनियरिंग पिला भी आजिकली पावर बीआई शिखुचंती ना हमको प्रोजेक्ट रे बेले बेले कहउचंती कि ना छोटो मोटो विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड रिपोर्ट पई कि तुम निजे ही कर दियो तुम पई कि थोड़ी ना मैं ए स्मॉल टास्क पई कि हम गोटे डेटा एनालिस्ट को हायर करि परिबन कि पावर बीआई डेवलपर को हायर करि परिबन हमर बजेट कंस्ट्रेंट अछि सो यू हैव टू बी अ फुल स्टैक सब जाने दरकार डेटा इंजीनियरिंग जानची डेटा एनालिटिक्स जानची डेटा साइंटिस्ट को भी पूछा से तुम भी पावर बीआई सीख दरकार पड़े छोट मोट रिपोर्ट तुम निजे बनई दब आम तुम गोटे आडिशनाल आणिक लक्ष लक्ष टका पे करें राइट सो से दीज आर दी प्राइमरी टूल्स आउ ए टूल्स गुड़ाक बेसिकली इजी हुए कौ मान जो मैंने नॉन टेक बैकग्राउंड रू था इवन आम बहुत सारा आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड रो स्टूडेंट जाइए आमर कॉग्निजेंट एक्सेंचर कैपजेमिनी एयरटेल बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी काम कर दे आर लिटरली फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड
पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री रखी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करछन बट दे आर वर्किंग एज लीड डेटा एनालिस्ट जण जण मैनेजर भी हे गरानी एनालिटिक्स टीम रो मैनेजर एयरटेल रे गोटे जियो बिजनेस एनालिस्ट अछि स्विगी रे थिला बेलिशियस रे अछि सो बहुत भलो भलो एम्फासिस एचपी सबुटी अछंती प्योरली फ्रॉम आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड इंजीनियरिंग कथा छाड़ दियो तो समस्त एतरे करियर करि परिबे मैथ्स रो बेसिक किछि नीड नाही ऑफ कोर्स डेटा साइंस रे तुमको मैथमेटिक्स दरकार पड़िबो आ स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी दरकार पड़िबो ओके एनी अदर जनरल क्वेश्चंस आउ कहार किछि भी जनरल क्वेश्चंस अछि तमे सेम काम एक्सेल रे कर परियो सीक्वल रे कर परियो पाइथन रे कर परियो पावर बीआई रे कर परियो विथ लिटिल वेरिएशन पावर बीआई रे विजुअल बहुत भलो देखा जाए whereas पाइथन रे कले एते भलो देखा जियोनी बट द नंबर्स आर सेम डिसीजन मेकिंग पाइंगा आमे किछि भी यूज कर परिया इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट कि सेही प्रोजेक्ट रे सी कोन यूज करछि फॉर एग्जांपल मो जणक पाखरे एज ए ड्राइवर जॉइन होउछि तांको गोटे तांको घरो हॉस्पिटल नंबर अछि एवरी डे ओके आई नीड टू नो ड्राइविंग ओके मत ऑटोमेटिक कार चले आसिया दरकार मैनुअल कार चले आसिया दरकार सीए को गाड़ी यूज करछि दैट डिपेंड्स ऑन हिम if he is using a automatic car I will drop him by using the automatic one if he is using a manual car I need to drop him काम सेम माने गोटे जगह आउटे जगह को नहीं की जाउची but it depends on client what car he is using accordingly I need to work like that Jedi the client is using Power BI, I will be working on Power BI to deliver the project. If the client is using Excel, I need to deliver the same thing by using Excel. So I need to know all the things. But most of the people will be using Power BI, so Power BI is much more required. Jemti mo driver example there, most of the people might be using manual car. So I need to be very good at manual car and I need to know how to use the automatic also. Following? Yes, sir. Right. Any other questions? सर ओनली आईटी सेक्टर माने जेमति हमर टीसीएस कॉग्निजेंट एक्सेंचर एडा की हायरिंग करंती ना अन्य जो इंडस्ट्री गुडा को एयरटेल वेटेल माने अन्य नॉन आईटी All इंडस्ट्री भी हायरिंग करे means डेटा एनालिस्ट everywhere, wherever the data is there to make decision making. because देखो टीसीएस वीसीएस जो मैंने हायर करंती थोड़ी ना खाली टीसीएस पाइंका तमे टीसीएस रे हायर होबो बट काम करियो एयरटेल पाइंका काम करियो आ गोटे नेस्ले पाइंका काम करियो कैस्ट्रॉल पाइंका राइट because they need the report TCS is just a service provider ना इवन 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 तमरो डायरेक्ट कंपनी जेमति मणिपाल हॉस्पिटल रे मझिरे बाहर थिला डेटा एनालिस्ट हाईटेक रे बाहर थिला प्रगति मिल्क रे बाहर थिला सब डेटा जोठी अछि डेटा एनालिस्ट दरकार डेटा इज नॉट वेरी स्पेसिफिक टू तमे निजे भी जाई कि नौकरी रे मु आम कथा को डोंट ट्रस्ट अस तमे नौकरी रे जाई सर्च करो टेक कंपनी जोठी डेटा अछि बेसिकली एयरटेल हे गला तमरो जेनपैक्ट हे गला तमरो जे कोनोसी कंपनी अछि जे डेटा संगे काम करछि आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक जो इंटरनेशनल बैंक डोमेस्टिक बैंक सबुठी तमरो डेटा एनालिस्ट हायर हुंती ओके तो सेति कि इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली आईटी सेक्टर पिल हमर जने स्टूडेंट बरहमपुर रे एसबीआई लाइफ रे काम करछि विथ अ पैकेज ऑफ 7.5 लाख्स सी भी माने एसबीआई लाइफ भी ताको हायर कला ताको एक्सेल और पावर बीआई रे काम तो सेमती माने बहुत सारा कंपनीज अछंती माने जो माने टेक माने आईटी नुहति कोर आईटी नुहति किंतु तांकर डोमेन अलगा से माने भी हायर कर कारण डेटा तो सबुठी डिसीजन दरकार सब कंपनी को ग्रोथ दरकार राइट आ ग्रोथ केतळ करियो जत तुम राइट डेटा को एनालाइज करूछंती बुझुछंती कोन चालची सिस्टम कोन चालची केमिति बिजनेस जनरेट होउची केमिति कोन एक्सपेंसेस होउची केमिति ताको रिड्यूस करि परिबे सो बेसिकली सेति पे इन्फॉर्म डिसीजन कोन नेबे बिजनेस को ग्रो करिया रे नले बिजनेस रे लॉस होउतले ताको केमिति रिड्यूस करिवे आ सेटा केमिति हेइ परिबे तुम जदी डेटा रे को एनालाइज कलो राइट तो सेति कि इट इज नॉट लिमिटेड टू समस्त भावती कि इट इज ओनली आईटी जॉब नथिंग लाइक दैट सो आईटी नॉन आईटी सब सेक्टर इवन छोट छोट फूड कंपनीज अच्छा मंचेश्वर रे आमर 2-3 जन पिला सेठी मंचेश्वर रे काम करछंती एग्री एग्री तांकर बेसिकली दे आर इनटू जूस आ बिस्किट्स एसु बनाउछंती एग्री बिजनेस रो तो से माने भी डेटा एनालिस्ट को हायर करंती इवन हमको गोटे रिक्वायरमेंट आस्तला कम सैलरी बोली हमें राजी हेलुनु तमर श्री लेदर्स तो समस्त जानिथिबो राइट यस श्री सर लेदर हाँ Yes, तो sir. श्री लेदर लिंगीपुर पाखे गोटे बड़ वेयर हाउस अच्छी से मैंने कहले कि सर आमे माने आमको गोटे सीनियर गोटे डेटा एनालिस्ट दरकार टिके सीनियर नहले भी 2 इयर्स एक्सपीरियंस हेतिबो आमको ना पूरा डेटा को एनालाइज करके आमको कहबो कि केते केते जल्दी हमर स्टॉक सरुची इन्वेंटरी
केमती पुणी भरा हबो राइट कारण बिजनेस को एनालाइज कला पर देखिबो ना केते क्विकली से स्टोर इन्वेंटरी रे चेक करिकि कहबो स्टोर सेठी ताकर पूरा इन्वेंटरी रोची लिंगीपुर ताकर बहुत बड़ वेयर हाउस अछि से पूरा एनालाइज करिकि ताको जेते क्विकली दबो से माने सेते स्टॉक भरिबे एई प्रोडक्ट सरुची जल्दी एई प्रोडक्ट डेली एतिक सेल होची केते क्विकली आज पर लुकिंग एट द करंट स्टॉक केते जल्दी सरीबो सेई से माने कोलकाता रो हेड ऑफिस रु मगेबे तो मु कहली सैलरी केते ना सैलरी सर 15 to 20,000 तो जेहेतु से माने टेक्निकल आईटी कंपनी नुह प्रॉपर ये कंपनी ये जो हमर बिजनेस तुमर शूज आ बैग से सब बिजनेस लेदर बिजनेस ये सब तो से माने अधिक तांकर सैलरी नथला मु कहली जदी 20,000 कहले कि एक्चुअली प्रॉब्लम कला 18,000 प्रॉब्लम नाही बट प्रॉब्लम होची से कहले कि 12 घंटा काम करिया पड़िबो तो किछटा पिला को हम अप्रोच करतलु से कहले कि नाही 12 आवर्स हेले बहुत अधिक हेदबा हम हे जिबा हम पढ़ा पर फोकस कर परिबोनी तो सेति पई कि रिक्वायरमेंट सबुठी अछि हला किछि जण माने एई छोटो स्टार्ट एक्चुअली स्टार्टिंग करियाटा बहुत इंपोर्टेंट जदि पिला माने जे 15-20 हजार रु स्टार्ट भी करछन 3-4 वर्ष भितर लक्ष टका पर्यंत पहुंच जाय जन जन कोनी नाही सर हमको स्टार्टिंग गोटे 30-35,000 सैलरी दरकार किंतु ओडिसा रे अपॉर्चुनिटी आसुची जदियो टिके कम सैलरी थाए ହେଲା କି ତ ସେମିତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛିଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି ଆଉ 12 ଆୱାର୍ସର କାମ ରହିବ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ସିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା ବଟ୍ ଲିଙ୍ଗିପୁର ଇଜ୍ ଫାର୍ ରାଇଟ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେନି ବଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ଗିଭ୍ ୟୁ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସେମିତି ସେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହାୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଡେଟାକୁ ଇନଭେଣ୍ଟରି ଡେଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିକି କ୍ୱିକ୍ ଡିସିସନ ଦେଇପାରିବେ ଓକେ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱାରି ଥିଲା ବିଜନେସ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ତ ମୋର ଡୋମେନ୍ ତ ଯେହେତୁ MBA ଅଛି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି ଯେମିତିକି ସାର୍ କହିଲେ କି ବହୁତ ଗୁଡେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଗୋଟେ BA ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସୋ ଆମର ମାନେ ମାର୍କେଟରେ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି କେତେ ରହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁଛି ମାନେ ସାର୍ କହିଲେ ନା କିଛିଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି କି BA ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ହଁ। ଦେଖ ମାନେ ମେନ୍ ହଉଛି ତମେ କୋର୍ସ କରିପାରିବ ଦେଖ ବିଏ ରେ ଆଡିସନାଲି ତମେ ବେଶୀ ପ୍ରୋସେସ ଏଇ ଟୁଲ୍ସ ଗୁଡା ଶିଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମେ ବେଶୀ ହୁଁ ପ୍ରୋସେସ ଉପରେ ଶିଖିବ କି ବିଜନେସ ଆନାଲିଷ୍ଟର ରୋଲ୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କ'ଣ ଓକେ ବିଜନେସ ଆନାଲିଷ୍ଟ କେମିତି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବନେଇବ କେମିତି ୱାର ଫ୍ରେମ୍ ବନେଇବ ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ ବିଜନେସ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବ କେମିତି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଠିକ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଶିଖିବ ବଟ୍ କାମରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି ନ ହେଇପାରେ କାମରେ ତମେ ଆଜ ଏ ଆନାଲିଷ୍ଟ କାମ କରିବ ମେ ବି SQL ପାୱାର BI ଏକ୍ସେଲ ରେ କାମ କରିବ ଇନିशिয়ালি ବଟ୍ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତମର ବିଜନେସ ନଲେଜଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଯାଇପାରିବ ମୋର ବହୁତ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା ତମର HSBC ହେଇଗଲା ସିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା ଆଜ ଏ ବିଜନେସ ଆନାଲିଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ସେଠି ତମେ ନା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲରେ ଯଦିଓ ନ ହବ ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ରୋଲଟାକୁ ତମେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମୁଭ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ରୋଲ୍ ନହେଲେ ତମେ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଏମିତି ଲେଟ୍ସ ମାର୍କେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଫିନାନ୍ସ ଆନାଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏମିତି ତମେ ମାନେ ମଡରେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଟେକ୍ କାମ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତ ସେଇ ରୋଲରେ ବି ଯାଇପାରିବ ରାଇଟ୍ ଏମିତି ବିଜନେସ ଆନାଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଦ୍ୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବଟ୍ ମିଳି ବି ଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ଆଲାଉ କଲେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ सो बिजनेस एनालिस्ट जस्ट अ मिनट बेसिकली तुम एई जिनस गुड़ाक शिखिबो जेमति गोटे बीए रो रोल कोन व्हाट इंट्रोडक्शन टू बीए व्हाई बिजनेस एनालिसिस ओके व्हाट इज बिजनेस एनालिसिस वेयर डू यू काहे के हमको दरकार रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ओके तापर कोन करे बिजनेस एनालिसिस वर्सेस बिजनेस एनालिटिक्स ओके बिजनेस एनालिसिस लाइफ साइकिल देन तुम मेन होची कस्टमर को बुझिया दरकार कस्टमर रो पेन पॉइंट कोन कस्टमर काहे की रिपोर्टटा बनेया को चाहूची तार बिजनेस रे कोन प्रॉब्लम एई सब सेशन तुमको 15-20 सेशन सेमती रहिबो ओके जोटी तुम एजाइल मॉडल जेमती काम केमती करा हुए केही तो का पाखु जाइकरी टास्क दियंतनी गोटे प्रोसेस फॉलो करंती each and everything will cover माने स्क्रम कोन एजाइल कोन जीरा टूल्स विषय शिखिबो कॉन्फ्लुएंस टूल्स विषय कारण तुम बिजनेस एनालिस्ट माने बिजनेस रो प्रॉब्लम बुझिया और ताको डॉक्यूमेंट करिया से पार्टटा तुम केमती वेयर फ्रेम बनौचो सेगुडा तुम शिखिबो बट इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर भी पार जदि तुमको सेमतिया रोल मिलला नहले वर्ष 2 वर्ष परे सेही रोल को गले करिवो बुझिपाल मु व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एंट्री लेवल तुमको इमीडिएटली कहीं देबेनी बिजनेस एनालिस्ट रोल तुमको ए टेक्निकल प्रोफाइल रही कि से रोल पे प्रिपेयर होबा को पड़िबो तमर कम्युनिकेशन को सेतिक स्ट्रांग कर परिबो तमे बिजनेस नॉलेज थिबो तमे कथा ही पर नथिबो क्लाइंट संगे क्लाइंट को चैलेंज कर पर नथिबो तुमको किस रोल दबो कंपनी तो कंपनी रो प्रोजेक्ट ही बंद हो जदि जने सामने वाला कथा ही कहि परनी क्लाइंट को क्लाइंट सुनै दबो सीधा ए कथा ही कहि परनी कोन काहा को पठैजो तमे बुझ
तो ସେଥିପାଇଁ କି ମାନେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏବେ ନହେଲେ ବି ଫ୍ୟୁଚରରେ ତମେ ସେ ସ୍କିଲଟାକୁ ଡେଭଲପ କଲେ ତମେ ଦେଖ ତମେ ଏବେ ବି ଦେଖ ବିଜନେସ ଆନାଲିଷ୍ଟର ବହୁତ ସାରା ଓପନିଂସ୍ ଥିବ ନୌକରୀରେ ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କର ବିଜନେସ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଅପରଚୁନିଟିଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କି ତମକୁ ସେ ସ୍କିଲ ସେଟ୍ ଡେଭଲପ କରିବାର ଅଛି ମେ ବି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟାକୁ ଗେନ୍ କରିବାର ଅଛି ବା ନଲେଜଟାକୁ ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜକୁ ଗେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଠି ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱାରି ଅଛି। କୁହ। ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ବିଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଛି। ମୁଁ ଡାଟା ସାଇନ୍ସ କି ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କୋର୍ସ କରିକି ଆଇଟିରେ ସୁଇଚ୍ କରିପାରିବି? ସାର୍ ଟିକେ ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟପ୍ କରିବେ କି? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍।